Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today my topic is process and its life cycle. This is one of the most important topic of operating system that I am going to discuss with all of you. Fine. Before starting up the sessions, I would like to request to all of you, please subscribe my channel, like and share my videos, hit the bell icon for the latest notifications. This initiative is especially for the students who are seeking the guidance, career guidance, as well as educational support. Either they are pursuing their B degree, either BCA, BTech in CSC, BTech in IT, MCA, MTech, or any other courses which is related to computer science, and they are very keen, they have shown the very keen interest about knowing the computer science concept, different types of topics. Okay, so I'm here to help you out regarding the career guidance as well as the educational supports. Fine. So today I have chosen this topic, that is process and its life cycle, because of certain benefits, because of certain advantages. If you are studying operating system, that you must know about the process and its life cycle. This is called the backbone of the operating system. Either you are from BCA background, BTech in CSC background, BSc cybersecurity, BSc data science, or any other of the courses, but this subject is the core subject which is for all of you. Fine. After those who are watching who has already completed their BTech or B degree, they are preparing for the technical rounds for the MNC companies, or they are preparing for higher studies or for any other competitive level exams such as GATE, NET, or NIMSET state level exams. They must be benefited from such topic discussions. So stick with the videos. Don't try to skip the videos. Try to watch the till the end, and you must be understand the very important logic of such topic. Okay, you always see the question paper of your semester of your annual examinations. The topic is very much important, and from this section question is mandatory. Fine. So before starting the session, we must need to understand what is process. Process होता क्या है, इस चीज को समझेंगे हम लोग. Fine. What is process? So basically, we have to take examples. When we write up code in C, int x, let have an example, int x equals to 10, int y equals to 20, then int sum equals to x plus y. That means what? We have written certain lines of code. Fine. This is one line of code, second line of code, third line of code. Combined together, it form as a program. It is called as a program. Program is what? It is the collection of instructions, set of instruction, which is called as program. So program, this is called the set of instruction. We have already written the code. We must have to save it somewhere. If you have saved, the program exists in your secondary memory. Fine. In secondary memory, the program exists. When you try to execute, जब आप execute करना चाहोगे इस program को जो आपने लिखा, execution जब करोगे, तब वो program secondary से main memory में आ जाता है. ठीक है. और जब main memory में आ जाता है तो इसका representation change हो जाता है. How? The program, when it was in secondary memory, it was in inactive state. Inactive means CPU is not assigned. CPU is not assigned in this state when it was in secondary memory. Understood? जब ये inactive है, that means ये execute नहीं कर रहा है. जब ये program execution करता है, तब execution के time ये main memory में आ जाता है, और ये program main memory में आने के बाद अपना image change करके process कहलाता है. Okay, the program turn into process once it's coming from the secondary memory to the main memory. आपको ये point समझ में आ गया होगा. How we can represent a process is what? A program in execution. Program in execution. Program in execution. Fine. It is also called active state of a program. फाइन. प्रोसेस का मतलब ये हो गया. अब ये समझेंगे हम, जब कोड लिखा हमने उसको सेव किया बट एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ प्रोग्राम. जैसे ही हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, वो अपना स्टोरेज को शिफ्ट कर जाता है फ्रॉम सेकेंडरी टू
मेन मेमोरी में आने के बाद उसी प्रोग्राम को हम क्या कहेंगे, प्रोसेस। अंडरस्टूड? तो ये प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है। अब ये जब प्रोसेस बन गया तो ऐसा ऐसा मल्टीपल प्रोसेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। जब हमारा सिस्टम ऑन करते हैं, when we turn on our system, try to understand, when we turn on our systems, इस system में multiple softwares are there that is also getting started, okay. So their programs will reside in the secondary storage for temporary when it is started. Whenever we click on the icon of the software or any application softwares, so then it gets started and their programs turn into as a process, and their storage will move to the memory from the second storage. Hope you have understood. Fine. You be careful while studying process and its life cycle, because lots of questions are there you can expect. This is the backbone of operating system. Again, I am telling you, don't skip this topic. Try to go through in depth, try to understand it. If you feel like that practice more and more from these sections, then you must have to assure that many questions are there in your exams. Fine, you have to practice more and more questions from these sections. First, you have to understand the concepts, theoretical knowledge about the process life cycle. Fine, hope you have understood what is program, what is process, how it is coming from the secondary into main memory, what it is called in secondary storage, inactive. Once it reaches to the main memory, it is called as active state. Fine. Now moving to the next one. Next points, how we'll be discussing about the process states. Fine. Process states. I'm giving you one example again for the process. When you have a Google Chrome or any other browser, when you open the tab, one tab, it's okay. Okay, one tab is okay. Whenever you open you multiple tab, so that means it is not a process. It become a thread. That is a different concept. Okay. If you open the multiple browser, then it is said to be as multiple. You have opened the Google, you have also opened the Opera Mini or any others. So this is the different process, this is a different process, this is a different process. So process 1 created, process 2 created. Different two processes will be created in such manner. Hope you have understood about the things. Okay. What is process states? That is very much important for all of you. We have understand about the process and its life cycle. Okay. When the process created, how it is moving from one state to another, basically you have to understand that process state is what it is called a life cycle. It is also a state. We can say a state transition diagram. We can also say this one. We can also say life cycle of a process. Life cycle of a process. Fine. All other same concept. Process states basically consist of 5 states. First one is new, second one is ready, third one is running, fourth one is waiting, fifth one is termination, you may write. Fine. These are the 5 states. Whenever a process 1 created, that means this process 1 has to traverse all these 5 states. Understood? If another process created, then again the same process 2 has to traverse all these 5 states. Fine. Without traversing these 5 states, the process cannot be executable. Fine. It cannot execute. This is the terminology we need to understand. Fine. Hope you will understand the concept more concisely. I'm drawing the states, how the states representing, how each states are different from one another. Fine. Okay. See, first state I have defined that as new state. Another state was ready state. Another state was running state. Another state was termination. This is the termination state.
Fine. Just look at here how the traversal happen. Fine. Another one is waiting state. Waiting state. Okay. See, let's assume you have a mobile phone. You are accessing multiple applications. What are the application we have? We have application of Zomato. We have applications of Swiggy. We have also applications of Ola. We have applications of Facebook. Fine. These are the various. It created process P1, it created process P2, it created process P3, it created process P4. Four different processes we have created, because when we click on this application, it will move. It will be in active. It will be in active state of a program, because the CPU assigned to the program that becomes a process. Fine. Another one is Swiggy P2. These are the four processes we have. Fine. So once the process is in the new state, before assigning that process P1, P2, P3, P3 and P4, four processes are there in the new states. Understood? Four new processes are there. That means in new states. That means in new state we have secondary memory. Secondary memory, SM, secondary memory. These processes are in inactive. Inactive. Actually, these process is called a program. Fine, we can say it is nothing but a program, because CPU has not assigned, main memory has not assigned to these process. Fine, this is the initial one. At the very beginning, whenever you turn on your system, whenever you are using mobile phone or laptop, it is on, but you are not using those applications. That means that application is inactive. It is not assigned the CPU, it is inactive. When you click on the application, it become a process. Understood? जब आप क्लिक करते हो आइकन्स पे, तब वो एप्लीकेशन प्रोग्राम रन होना शुरू हो जाती है. और until or unless जैसे ही मल्टीपल प्रोग्राम्स आपके मोबाइल फोन में है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में से, सो वो क्या होता है, वो रिसाइड है आपके सेकेंडरी स्टोरेज में. जस्ट लाइक दिस सिनेरियो, ये न्यू स्टेट में है, वो पड़ा हुआ है आपके आपके एप्लीकेशन से, आप एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहे हो, बट वो एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारा प्रोग्राम्स है, द रिटन कोड ये एक्टिव नहीं है बट इनएक्टिव है. जैसे ही आप क्लिक करोगे जोमेटो एप्लीकेशन पे या स्विगी एप्लीकेशन पे या ओला या फिर एफबी पे, तो वैसे ही उस एप्लीकेशन का, वो सॉफ्टवेयर का, उस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का आप जो पोर्शंस है वो आप एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट करते हो. वो प्रोग्राम्स प्रोसेस बन जाता है. ठीक है. तो जैसे यहाँ पे न्यू है, तो न्यू से बहुत सारा प्रोसेस जाता है, मल्टीपल प्रोसेस. लाइक 4 प्रोसेस यहाँ पे है, तो यहाँ पे P1, P2, P3, 3 प्रोसेस यहाँ पे चला गया. द 3 प्रोसेस ट्रांसमिटेड टू द रेडी स्टेट्स. तो यहाँ पे जो है, इस एंड पे याद रखना, हमारे पास शेड्यूलर काम करता है. शेड्यूलर इज नथिंग बट अ segments of code, segments of programs we can say, which has the ability to transmit the number of programs from one state to another state. That means from new state to ready states. Bring all the maximum number of process from new state to ready state. That is the task of scheduler. What type of scheduler here it work? Long-term scheduler. Long-term scheduler. Fine. So long-term scheduler works at this end, bringing number of process, maximum number of process, brings maximum number of process from new to ready. That is the task of long-term scheduler. Hope you have understood. So bringing a maximum number of, that means how many processes it bring? P1, P2, P3. 3 process it bring from new to ready state. So previously it was in secondary storage. When it reaches to the ready state, it is residing in main memory. Fine. Main memory. So maximum number when it brings, it is called degree of multi-programming. Degree of multi-programming. What is degree of multi-programming? Degree of multi-programming is defined as the maximum number of process brought or bring from new state to
रेडी स्टेट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस। सो जितना से ज्यादा प्रोसेस आप न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में भेजोगे वाया लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, आप उसको बोल सकते हो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज हाई। सो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा शेड्यूलर काम करता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। फाइन, ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस, दैट इज द कांसेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। वो टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइन, ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हो गया। जैसे ही रेडी स्टेट में प्रोसेस आया, हाउ मेनी प्रोसेस? 3 प्रोसेस, स्टिल P4 इज देयर, P4 इज स्टिल देयर ना P4 नहीं आया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, रेडी स्टेट में आने के बाद अब एक और काम क्या है, यहाँ पे मेन मेमोरी तो मिल गया, द प्रोग्राम टर्न्स इनटू एज प्रोसेस, बट इसको सीपीयू चाहिए। CPU चाहिए means what? We can talk about uniprocessor, not multiprocessor. Fine. Uniprocessor means unique processing system, we can say. Unique processing system means the ability of a processor to execute one at a time. Multiprocessor processing system means multiple process at a time we can execute. That's the task of the operating system. Fine. So यहाँ पे 3 process है. We have 3 process in the ready state, which is in the main memory. But which process will get the CPU? CPU residing यहाँ पे करेंगे हम. The assignment of CPU will be here. Fine. Assignment of the CPU will be here in this state. That is called running state. जैसे ही आपने क्लिक किया किसी आइकन पे, क्लिक करने के बाद वो ओपन हो, दैट मींस मेन मेमोरी में, वैसे ही आपको CPU असाइन हो जाएगा। तो कौन सा प्रोसेस पहले जाएगा? आपने क्या किया, जोमेटो भी ओपन कर दिया, स्विगी भी ओपन कर दिया, ओला, सारा एप्लीकेशन ओपन कर दिया, बट इस पे प्रायोरिटी है, कौन पहले जाएगा, विच विल गो फर्स्ट टू दी CPU. CPU will allocate. Okay. So CPU assigned to any specific, like P1 को मिला, ये क्या डिसाइड करता है? इसमें हमारे पास शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम आता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ये शेड्यूलर क्या करता है? मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस, शॉर्ट टर्म, फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है, एक प्रोसेस, 2 प्रोसेस, इस तरह से। यूनिक प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए एक प्रोसेस एट अ टाइम, 1 प्रोसेस एट अ टाइम। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए मल्टीपल प्रोसेस एट अ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिक प्रोसेसिंग मींस P1 गया, P1 को CPU असाइन हो गया, दैट मींस P1 has got the CPU control, okay, processing control, that is called short term scheduler. यहाँ पे जो स्विचिंग होता है ये काफी फास्ट होता है, बहुत ही फास्ट, ठीक है, क्योंकि प्रोसेसर है ना, मल्टीपल प्रोसेस इट इज टेकिंग, क्योंकि आपके मोबाइल फोन पे बहुत सारी एप्लीकेशंस है यू आर रनिंग, सो सारे एप्लीकेशंस को कंट्रोल करना, मैनेज करना, ये किसका टास्क है, ऑपरेशंस है, ये सीपीयू का। दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सीपीयू। तो क्या है यहाँ पे? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। यहाँ पे तो एक साथ बहुत सारा बल्क नंबर ऑफ प्रोसेस लेकर आ गए रेडी स्टेट में, बट इट इज नॉट हैपनिंग द सेम थिंग्स हियर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या कर रहा है? For a short period of time, it bringing one processor at a time for uniprocessing system. जैसे ही CPU मिला P1 को, P1 के लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे आपको बताया मैंने। लेट अज्यूम P1 है, इसमें इंस्ट्रक्शन int x है, int y है, int sum है, तो ये सारा इंस्ट्रक्शन है। तो P1 के अंदर ये जितना सारे इंस्ट्रक्शन है सारे को कवर करेगा, ठीक है, ये सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। वंस इट्स कंप्लीटेड, P1 को सस्पेंड करेगा, खाली करना है, मेमोरी से फ्री करना है, तो ये टर्मिनेशन स्टेट में भेज देगा। तो P1 ने अपना एग्जीक्यूशन पूरा कर लिया है, अगर कर लिया है, सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लिया है उसने, एग्जीक्यूट कर लिया, तो वो टर्मिनेशन स्टेट में जाएगा। टर्मिनेट होने के बाद ये मेमोरी फ्री हो जाएगा, द मेमोरी विल गेट फ्री। फाइन, आफ्टर गेटिंग इनटू टर्मिनेशन स्टेट, द मेमोरी विल गेट फ्री फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोसेस P1। अंडरस्टूड? तो P1 ने प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लिया, P1 एग्जीक्यूट हो गया है। लेट अज्यूम P2, नेक्स्ट प्रोसेस शेड्यूल किया है P2। फाइन, P2 जैसे ही रनिंग स्टेट में आया है, उसके ये इसको मैं P2 कह देता हूं, ठीक है। दिस इज अगेन आई एम शोइंग द सेम, हैविंग मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, int x, int y, int sum। फाइन, अब क्या होता है? P2 ने पहला इंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया, दूसरा इंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट कर लिया, बट क्या हुआ? अगेन सम हाई प्रायोरिटी प्रोसेस केम, सम हाई प्रोसेस प्रायोरिटी, दैट मींस P3। P3 वांट्स टू टेक द कंट्रोल ऑफ द CPU। CPU का कंट्रोल P2 लेकर था, but some high priority process came, that means P2 has to stop. P2 has to stop, that means that is called the preemption, we can say preemption. Preemption means in between the executing process get stopped. Fine, that is called preemption happened.
some high priority process came while executing the previous process P2. P2 has to stop. P2 will P2 will stopped. It will not continue after two instructions. It has executed two instructions, one left, so it will be in waiting. So it will move back to the ready state. P2 will move back to the ready state. Understood? So this P2 will be in the ready state. Again, it will back to the ready state. Now P3, which was the high priority, it will get the control of the CPU. So still one instruction of the execution left for P2 now, but P2 now residing at ready state. For one instruction is left for P2. Fine. So that means what? यहाँ पे क्या हुआ? P2 रेडी स्टेट में चला गया, जिसका एक इंस्ट्रक्शन बाकी था कंप्लीट होने को, लेकिन P3 हाई प्रायोरिटी था. प्रीएम्प्ट करने के बाद प्रीएम्प्शन किया. During the continuation of the process, some high priority came and make some obstruction and it get the control of the CPU. That means P3 get the control of the CPU and start executing. ठीक है? तो P3 ने कंप्लीट किया. P3 move to the termination. P3 ने कंप्लीट कर लिया. फाइन. अब देखो यहाँ पे एक प्रोसेस जो बचा था उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FIFO, जो कि यहाँ पे आ गया. लेट अज्यूम यहाँ पे क्या हो रहा है, P2 जो यहाँ पे रिसाइड कर रहा था, ठीक है, P2 जो रिसाइड कर रहा था, P2 अगेन केम हियर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ P3. P1 P3 कंप्लीटेड, P2 यहाँ पे आ गया. आने के बाद क्या हुआ, P2 का एक इंस्ट्रक्शन जो बाकी था, P2 ने एक इंस्ट्रक्शन पूरा किया और टर्मिनेशन के साथ वो कंप्लीट कर लिया. तो ये P1 P3 P2 इनका सारा ही मेन मेमोरी से it will be freed from main memory. No space for P1, P2 and P3 will be there because this process has completed its execution. Understood? Fine. अब क्या हुआ, कौन सा प्रोसेस बचा? Only the remaining process is P4. Fine. Only these things are done by the short-term scheduler. Try to understand which has the responsibility, which is the responsible for taking the process from ready to the running. Only done by the short-term scheduler. The function of the short-term scheduler is to bring the process from ready state to running state and so on. Fine. This is the function of short-term scheduler. Now the last process, that is P4 remaining here. P4 move to the running state. It get the control of the CPU. Fine. So let assume यहाँ पे मैं आपको example दे रहा हूँ. That means P4 है. So P4 is one of the process which was left. P1, P2, P3 has already completed its execution. Let assume the things कि P4 का कुछ instruction है, int x है, int y है, int z है, all have some values. Fine. Int sum x plus y plus z. Fine. ये कुछ instruction है. These are the instruction. P4 ने क्या किया? P4 यहाँ पे कंप्लीट किया, यहाँ पे कंप्लीट किया, कोई अदर प्रोसेस नहीं आया. No other process involved, no preemptions happened in this scenario. What happened? Some input-output operations happened. That is called input IO. Input-output operations means some kind of other activity processes are busy in, like creating a file, opening a file, or deleting a file, or something else. Other kind of functions it get involved. Processor has some other functions ना in file management. So such kind of input output operations, अगर आपने कोई USB यूज कर लिया है, या फिर मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी यूज कर लिया, या फिर कोई डेटा केबल यूज कर रहे हो अपने सिस्टम पे, या फिर कुछ भी करे, तो उसमें क्या होता है, इनपुट आउटपुट. या आपने क्या किया, कनेक्ट किया है, ब्लूटूथ कनेक्ट किया है, या आपने स्पीकर कनेक्ट किया है, तो कुछ भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हो रहा है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्जिस्टिंग प्रोसेस. उस वक्त क्या होता है, एक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होता है. बट यहाँ पे प्रीएम्पशन का कॉन्सेप्ट नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर इज नो सच काइंड प्रीएम्पशन. प्रीएम्पशन हैपेंड इन दिस एरिया. रेडी में P4 रनिंग से डायरेक्ट ये रेडी स्टेट में चला जाता है. इट विल मूव टू द रेडी स्टेट. अगेन इट विल कंटिन्यू विद द सेम पोजीशंस वेयर इट वाज स्टॉप्ड. तो यहाँ पे इनपुट आईओ ऑपरेशंस होगा. जैसे ही दो इंस्ट्रक्शन इसने कंप्लीट किया, कुछ आईओ happened, input output operation happened in between. So those processes went to the waiting state. Waiting states के बाद, वो waiting states के जाने के बाद it will move to the ready state. It will not move to the direct from waiting to the running. It will move to the ready state. Again it will move to the ready state and it will move to the running state. Fine. This happened in this way.
इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस दैट मींस कॉल्ड, कोई भी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम्स होता है या सेव कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज बिजी और busy in doing saving the files, deleting the files, or giving the permission of external peripheral devices, whatever the other activity that the operating system involved, that is called without anything like process. Process is not created. Some other input IO operations happen. On that in that scenario, it is called a waiting state. Fine. यहां तक हो गया. अब ये जो क्या हुआ, remaining instruction without preemption, it will move to the ready state. Again, it will continue. Once the input output operation is done, it will again continue. यहाँ पे P4 आएगा, वो भी terminate हो जाएगा. So P4 also done execution. यहाँ पे जो memory था multi programming, it becomes 0. Memory free हो गया, ये भी free हो गया. Again कुछ आपने दूसरा like Instagram open किया, तो Instagram के लिए फिर some process created P5, P6 again, or P1 from the beginning it will create P1, P2, P3 and so on, and the same things happened again and again. So यहाँ पे क्या समझ में आया? The main things we need to understand which which scheduler is working here. Here you need to understand the scheduler in bringing the process from new to ready. There is a long-term scheduler. From ready to running, we have the short-term scheduler. From waiting to suspend. From waiting to suspend, there is a short-term scheduler. Short-term scheduler. There is another states we can say, or we can say suspend. In some textbook, you can see in Galvin have some representation in the short-term scheduler here. Medium-term scheduler. Medium-term scheduler. Fine. Here, like bringing from ready to running, this is called the dispatcher. Dispatcher. Dispatcher is a term very important for exam perspective. Sometimes the definition types of question might ask, what is the dispatcher? Dispatcher is what? It is the process through which it is the way, or it is the process through which it brings the number of process from ready to running state. Fine. It dispatch the process using the short-term scheduler. Fine. So it is the part of short-term scheduler. Medium-term scheduler क्या करता है यहाँ पे? Swap in, swap out. What it does? Medium-term scheduler does swap in, swap out. Fine. तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप कुछ वेटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, लेट अज्यूम यहाँ पे बहुत सारा प्रोसेस वेटिंग कर रहा है, P4, P5, P6 and multiple processes are waiting here. Fine, multiple processes are waiting here. यहाँ exhaust कर गया, spaces are exhausted and no more spaces are there. तो ये क्या करेगा, कुछ प्रोसेस को एक अदर एक्स्ट्रा, जिसको वी कैन से सस्पेंड स्टेट्स, स्वैप आउट करेगा. स्वैप आउट कुछ प्रोसेस को यहाँ पे सस्पेंड कर देगा. सस्पेंड करने के बाद यहाँ पे स्वैप इन भी करेगा. जैसे सस्पेंड किया वैसे स्वैप इन भी करेगा. ठीक है, दैट इज द थिंग्स हैपन हियर. फाइन. अच्छा, यहाँ पे ये प्रोसेस है वेटिंग में, अगर यहाँ पे भी फुल हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे भी फुल हो जाने के बाद क्या हो रहा है, सस्पेंड करने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फिर से रेडी स्टेट से शुरू हो जाएगा. ठीक है, रेडी स्टेट से वंस इट्स मूव टू द वेटिंग विल मूव टू द रेडी एंड इट अगेन पुश द प्रोसेस यूजिंग द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट. यहाँ पे आपको समझने का है कि किस तरीके से लॉन्ग टर्म शेड्यूलर वर्क कर रहा है, किस तरह से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर वर्क कर रहा है, और किस तरह से मीडियम टर्म शेड्यूलर वर्क कर रहा है. So the 5 states diagrams it is called. This is the extra one. In some textbook it is suspended state given, and some textbook is given only 5 states. Fine. Here is also this position the medium term scheduler works. Fine. This is also called 5 state transition diagram for process or process life cycle. ठीक है. सो प्रोसेस जब क्रिएट करता है, जैसे हमने देखा P1, P2, P3, तो वहां पे प्रोसेस के लिए बहुत सारा चीज होता है. तो प्रोसेस का पीसीबी होता है. पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में हमारा प्रोसेस आईडी होता है, प्रोसेस स्टेट्स होता है, प्रोसेस यहाँ पे रजिस्टर्स होता है. ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो प्रोसेस मेंटेन करता है हर एक प्रोसेस में. जैसे प्रोसेस इस स्टेट में है तो प्रोसेस आईडी अलोंग विद द प्रोसेस स्टेट्स विल बी अपडेटेड.
जैसे ही प्रोसेस इस स्टेट में गया तो पीसीबी अपडेट कर जाता है. तो पीसीबी is very much important for your exam perspective related to process also. Hope you have understood the entire concept of process and its life cycle. It is very much important for your exam perspective, either for the university exams or college level exams or any other examinations, especially for GET level as well as NET as well as the state level exams. So don't try to skip this topic. Try to understand this topic more concisely and try to give focus. Try to practice more and more types of questions. In next video, I'll be explaining the related to the process scheduling algorithms. Okay. Related to the process, we have the important types of algorithms which works on various kinds of criteria. So that we'll be discussing. Okay, today is the first topic that I have chosen, that is the process life cycle and its importance. So hope all of you have understood. You have to like this video, share this video, as well as subscribe my channel, hit the bell icon for the notifications, and I'll be uploading more and more topics related to the operating systems, and in my upcoming videos I'll be posting so many questions related to your competitive exams, related to your university exams. So don't forget to like, share and subscribe. Try to go try to see the videos, try to watch the videos clearly. Okay, don't try to skip it. Hope you have understood. Okay, take care, bye bye, see you in the next video. Thank you.